Yes, you're right. Live. Okay, okay. Just wait for another 1 or 2 minutes, then you can start. Sure. You can start now. Yeah, sure. Yeah, good evening, everyone. Mahesh this side. As we informed you today, our concept is based on SVI, Switch Virtual Interface, which is a very important topic to establish any network in layer 2. So most of the people are known about this SVI, and I believe that a lot of people is also beginner who want to know what is the actually switching and how switch forward their packets based on what. So I'm decided to start this from the little bit basics, which don't take much more time for that. So generally we know like switch is used to connect multiple users on multiple systems to establish their communication. But there is one concept, that is VLAN. When we are using this, when we are creating VLANs and we are segregating after creating a VLANs, it will be like the switch will act like a multiple, like that there's no communication between one VLAN to another VLANs. Like that, there is concepts, so which will start very soon. Just a minute. We will cover today like inter-VLAN routing, router on a stick, switch virtual interface. Okay. So basically, as I said, like what is the use of inter-VLAN routing and their benefits? Inter-VLAN routing is used to establish communication between two different networks, or we can say like two different VLANs. Okay. So before that, one more concept is concerned, that is VLAN. VLAN is we are creating to establish communication, like to providing the layer 2 securities and minimizing the broadcast packets. So what is the benefit of minimizing the broadcast packet? So the benefit is to less use of hardware resources. So if suppose any device is using a less hardware resources, so the performance and the life will be very high for that device. So as inter-VLAN routing, there is legacy mode, which is very old, which is outdated, but we'll cover this also. And that router on a stick will cover, and switch virtual interface will cover. Okay. So just a minute. I start with some example. Generally, based on their symbol, please don't underestimate the switch, router, and firewalls. This is the one diagram which I prepared to describe how actually the real-time networks are networks are working, and what are the things which we use to establish the network, and what kind of configuration we require there to establish the secure communication. So as you are able to see here, this is our ISP. Like ISP means internet service provider. It may be Airtel,
It may be another ISP for that high availability, that is Geo, okay, which is connected to this router. Again, it is routed with our router, and with this router, if you able to see, there is one more router, and there is one device that is called Firewall to secure the tunnel. Okay, there is one switch and there is one server. This is based in the DMZ zone. So again, if you see, these are our campus network, and we can also call these are our local area network. And from here to there, it will be like, it will be handle the wide area network. Okay. So what are the devices are using here? Look, first we are using router, okay, based on our topology. Then we are using firewall to secure our DMZ zone. Then we are using firewall to secure our lane network, and also there is some like servers to like DHCP, DNS, or any other data which we are saving in that our organization. For that, there is one dedicated server which you do not want to open over the public network. So it is to secure this, there is one firewall. Based on configuration only, the firewalls are running. So switches are, as we know, like it is used to combine that PCs or end users. So switches hierarchy will be like, core switch. This will be like, as we are able to see, this is a core switch. This is like, distribution switch, and this is our access switch. So based on their capacity and based on their ability, that hierarchy is created by that Cisco. And when we are having a understandability about this, device performance, device ability, accordingly only we can do that configuration, and we can create our real-time topology. Look, as here there is one switch, that is a L3 switch. Between their some connectivity is based on topology. We are the connectivity is established with HA. Okay, so if you are able to see, there is SVI are configured here. In this side also SVI is configured. In the same manner, there is one more SVI. Okay, so what is the use of SVI and what is the use of switches? How switches are forwarding? How routers are doing their finding the best path and forwarding their packets on the best path. So the router and switch and the firewall are the mainly these are the network device which are using to establish that topology. So firewall is used for secure our internal or external network. Router is used to establish the communication between two or more different networks, and the switch are used to use for the connectivity, like our end user connectivity, our access point connectivity, our server connectivity. So all over the traffic filtering will be done here in the firewall, which they are going to allow, which they are not going to allow, means which is allowed, which is denied. Okay. So based on our topology, it is going to be configured, and these are the main devices which we're using to establish the topology. So router is a, as I said, like router is a L3 device, we can say, because a router is having a ability to understand that L3 packet, that L3 header. Okay. And in the same manner, switches are having, by default, there is having like, L2 header reading capacity. And the same way, firewall is by name only, it is saying like it is the used to secure by unauthorized access or threat, any kind of threat. If someone want to enter your organization network, it will check first whether that this allowed or not, that permitted or denied. Everything it will be denied. That for the denied network, it will be drop the packet, and the allowed network, it will be allow the communication. So it is our secure topology. Okay, so this is just a small
information about these devices and their uses. Okay. So now let's come to our today's agenda, that is SVI. So before that SVI, I would start from that VLAN, and we'll also cover the encapsulation, that is .1Q and ISL. After that, we'll cover the inter-VLAN and router on a stick and L2 and L3 switch packet forwarding, how they are based on what detail they are going to forward their packets. Okay, so I have one diagram. I created one diagram for this live session today. So hope you are able to see my screen properly. And look, this is a switch, and there is an in this switch, and four devices are connected. That four pieces are connected. Each devices is having their own IP address, which I already assigned here, and they are smoothly able to ping one. They are able to communicate with each other. Like if we say, if you want to ping from 10.1 to 10.4, so it will be easily without any impact. It will be allowed to, like, communication will be established. Look, they are able to communicate. Okay. So in the same way, if I ping to 10.3, the communication is established here as well. So there is no foundation and there is no any configuration is done except this IP assigned with this machine. So the communication is happening without any issues. So in this, suppose my requirement is that this two device, suppose we can say like this management, this is part of management. Okay, and this is department of account. So our requirement is like management can't speak with the account team and account can't speak with the management team. Okay, so for that we are creating the VLAN. Okay, let's see how we're creating. Most of the people knows that. So I'm just going to create one VLAN 10. Just go to configure terminal, that VLAN, and VLAN ID is a 10. Okay. VLAN 10. We can say the name also like MGMT management. Okay. And in this VLAN, we can segregate these two port. Like, let me check it once. Just a minute. For example. So when we're creating VLANs, just now I created in this switch that one VLAN, that is a VLAN 10. VLAN 10. So this two port will comes under the VLAN 10, and again I will create one more VLAN that will become under VLAN 20. Okay, so this both port will be like, these are physically connected with one single switches, but it will be act like there is some, like, they are not connected with a single switch. Let's see how to move on this packet, this interfaces to that under the VLAN. In the same way, I'm also creating one more VLAN. Okay, let me create VLAN 20, and that name will be a account. Okay, so that is done. Interface range. I'm just adding this two port, like F01 and F02 under that VLAN 10. Okay, in the same way, we'll add to that F03 and 4 to under that VLAN 20. Interface range, first net 0 by 1 to 2. Switch port mode access. Switch port access VLAN. In which VLAN? That is 10. Okay, it is done. So this I will show once this is done. Configuration terminal, again, that interface range. Interface range first net 0 by 3 and 4.
2 by 3 by 4. Switch port mode access. Switch port access VLAN under VLAN 20. So if you see like so VLAN, look, I created one VLAN that is the 10. The name is MGMT management. Again, I created one VLAN that is 20. The name is account. So MGMT, like, in under this VLAN 10, I bring these two port, like a first net 0 by 1 and 0 by 2. And the same way, I bring these two ports in under the VLAN. So let's see again, there is able to there any communication is established happen or not. Earlier we are able to ping that 10.3. This time I don't think so. It won't allow. Actually, it will block. See. So with the VLAN, we are getting two things. One is layer 2 security. Another is it is dividing the broadcast. Like, there is 24 or 48 ports of switches are coming in. Suppose there is 48 switches are connected, 48 systems are connected there, and all are under the same VLAN. So suppose one broadcast, one machine will generate ARP packet, so it will be broadcast to that all that available devices, right? So which is used, and which for that hardware utilization will be also very high. That's second thing. And first thing, there is like there is no communication between this both account and management. Okay, in the same way, there is one more option. Like suppose we want to establish communication from this management and that account team. So it comes under the picture that is called interVLAN. So to configure the interVLAN, there is three options, three type of way that through that we can establish the communication between these two different VLANs, and or we can say like two different networks. So that is for that there is no capability in this switch where I can configure anything to make the communication between these two. For that, I need a L3 device, because there is a two different, it will be act like a two different networks, right? So switch is not having capability to establish the communication between two different networks or two different VLANs. For that, we require one L3 devices who understand that, who is ability to read their L3 packets. L3 means that our IP packets. Okay, so we'll see. Let me make here like management, and here I can say that account. Just stay tuned to understand more about the SVI and other like interVLAN concept, because we generally know it is very easy, but we have to know like how that switch checking their ARP table and MAC address table and that routing table to forward the data to the correct destination or the correct machine. So for that, you just be with me. Let's see. Again, I need to create. I'm creating one same VLAN. VLAN 10. Name will be management. Again, I'm creating VLAN 20. Name will be account. So in this, again, we are going to interface range fast Ethernet 0 by 1 and 2. I'm adding here. Okay. Fast Ethernet 0 by 1 and 2. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. In the same way, again, I'm adding these two ports under this VLAN. Interface range fast Ethernet 0 by 3 and 4. 0 by 3 and 4. Switch port mode access. Switch port access VLAN 20. Okay. So this time,
I'm trying to explain about this legacy mode. Okay, so let me add this. So we are able to see here this both PCs comes under VLAN 10, and this both PC will become under VLAN 20, and there will be no communication between this and this. Okay, for that we need one L3 device that is called router, which is capable to establish the communication between two different networks. Before that, there is as I said, like there is three way to establish that inter-VLAN routing. Okay, so first way is a legacy mode that is outdated. So legacy mode, under this legacy mode, I need one. Suppose there is 10 VLAN. Suppose VLAN some 30, 40 like that. There is suppose 10 VLANs am available in that office. So for that 10, there is no possibility to create create a physical link for each VLAN. Here there is a single interface, physical interface is available. For that, where I can move either 10 or either 20. I can't move 10 and 20 with the same physical interface. For that, I need one more interface for the VLAN 20, for VLAN 30 or VLAN 40, VLAN 50, like that. If as per the number of VLAN, I need a number of interfaces to establish the communication, which is a very costly, and it is outdated. But we have to understand, we have to know that is also one option. Okay, let's see how it is working. For that, I need one more interface. Let me connect that. So we can say we are able to see, like, there is one gigabit 0 by 1 and 0 by 0. So in this 0 by 0, I will create here one interface, like, to suppose this both PC want to communicate with this both PC. For that, they require one gateway. So gateway will be for this gateway IP. Gateway IP will be always there, like interfaces where they can exit. So suppose there is one, let me erase this to make it clear. Okay, so for that, for this VLAN and this VLAN, we required one gateway device, one gateway IP. So for that, I need one more interfaces. Okay, for example, this interfaces is created for VLAN 20, and this interface will be travel the VLAN 10 packet will be travel under this this interface. Okay, so I need one gateway, as I said. So for this, suppose gigabyte 0 by 0, and that IP will be like 40.0.0.100 if I am creating here. Okay, in the same way, I am creating here 10.0.0.100. So through this, in this machine, I just assign the IP address. I also, there is one more option, that gateway. So where I need to put this gateway IP. So with that help only, this packet will be move here, and this router will check their routing table, because there is in two like in different networks are available. One is 10 and one is 40. So based on the routing table availability, the router will decide to where and which interface I need to send the packet. Okay, so when the packet, suppose packet will coming from here, and suppose 10.0.0.10 want to ping that 40.0.0.10. So what will be how the communication will be happen? So first the packet will be moved from here. It will reach the switch to the router. Router will check their routing table. Okay, in my routing table, there is 10 network, which is their interface is gigabit 0 by 0. Another interface, like VLAN 20, for VLAN 20, there is 0 by 1. So it will take the packet. It will check their routing table. Based on their routing table availability, it will forward to the particular port, and the communication will become like this. Okay, so these are the things how that legacy method will work. Let's see how we are going to establish the communication between this.
So in this, there is one more of F06 and F05. In this both port also I need to add in under the, suppose F05 will come under the VLAN 20 and F06 will come under the VLAN 10. Let's add them. Interface, fast Ethernet 0/6, switch port mode access, switch port access VLAN 10. So this that first Ethernet 0/6 interface also comes under the VLAN 10 only. Again, we are moving to that interface first Ethernet 0/5. Okay, 0/5. Switch port mode access, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Now check that we make table there. So VLAN brick. So are you able to see here, like VLAN 1, 2 was there only earlier, and third and fourth was there earlier in the accounts. Now again, that first standard 0/6 and 0/5 are added there. So again, we need to go with the router for the configuration to provide their gateway IP. Enable config terminal interface gigabit 0/1. IP address, which IP address? Like 10.0.0.100, that 255.25, their subnet mask based on their CIDR value, 255. Okay, so no shutdown. Okay, in the same way, we'll assign gateway IP for the another VLAN 20, which is interface gigabit 0/0. IP address will be like 40.0.0.100. Subnet mask will be the same way. Okay. Configure terminal. Interface gigabit 0/0. No shutdown. Give some time to make their connectivity. Look, you are able to see there is an amber light. So the communication is going to be established with this, between this router and switch. Once it comes with the green, we'll check that they are able to access from 10 to 40 network. Just a minute. Yeah, we can see here. Now we can check that IP, which one assigned 10.0.0.10 and the 10.0.0.100, which I given that IP for the default gateway, which is the IP for this gigabit 0/1, and this that is fine. Again, we also need to check here which IP here assigned. That is 40.0.0.10 to 55, and same way I given the default gateway for this gigabit 0/0, that is 40.0.0.100. Let's see the established communication, whether they are able to ping each other or not. Ping 40.0.0.10. Some packet will drop. Yeah, now our communication is going to be start. Okay. So the communication is done. Because of we have to check that routing table. So IP route by the command. So IP route. So if you are able to see here, there is only IP like 10 and that 40. 10 is for VLAN 10 gateway, and the 40 is for the VLAN 20 gateway assigned here. So based on this only the communication is done. If suppose there is two VLAN, or simply there is 2 or 3, that is fine. But if suppose
imagine there is 10 to 14 VLANs created, and for that we need 40 physical, physical interfaces to connect, which is really not going to be seems possible, and it is based on cost. So overcome this, there is one more option, router on a stick. So what will be happen here? How the communication will be start here? We have to see. Most of the people knows that about this. So in the same way, I created one more topology, which will be a 10 and 20, 10 and 20. This is a management, and this is your account. Look, this time we'll use single physical interface to make the establish from here, from this VLAN 10 to VLAN 20. How? Based on their, there is one interface, that is gigabit 0 by 0, where I will create some one logical interface will create here, that we can also say virtual interface we can create here. So what is the gigabit 0 by 0? So as I already mentioned here, the virtual interface will be for this particular VLAN. I'll create, that is 10.0.0 sorry, 10 by 0, sorry, 0 by 0.1. The IP will be there 50.0.0.100. The gateway will become for this 100. In the same way, I created one more interface, like virtual interface for this 20 VLAN. Okay, so let's see how the packet will be packet, and that that communication will be established here. This is called router on a stick. Earlier it was that is also called router on a stick, but that is a legacy mode, which is outdated nowadays. Enable configure terminal. Okay, let's see whether what are the things I created here. Enable so VLAN brief. I think I didn't do anything yet. Till now there is no any VLANs are configured. So let me configure first the VLAN, and post that will bring some that ports under that VLAN. First, for that we need to go the global configuration mode. VLAN 10. Name will be management. VLAN 20. The name will be account. Okay, so we need to bring their interfaces, like first Ethernet 0 by 2 and a 3. Here you are able to see, like, this port. This is first Ethernet 0 by 2, and this is the first Ethernet 0 by 3. And the same way, there is an 4 and there is an 5. Okay, so let me bring that. Yeah, interface range, first Ethernet 0 by 2 to 3, switch port mode access, switch port mode access, switch port access we under VLAN 10. That is done. And again we'll do that same interface range, first Ethernet 0 by 3, 0 by 3 and 4, switch port mode access, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Okay, so what we have to do here in this time, we need to create this interface as a, this interface, that is first Ethernet 0 by 1 will be our trunk port for this. Earlier what we did simply we connected physical interface, so there is no requirement any that service is not required there. Okay, for the physical connectivity, but for this virtual connectivity we required here. So we'll configure that. So trunk is, I hope most of the people are available, or if you don't know also, that I'm going to tell you that this is used for the trunk service. There is two kind of trunk, is like encapsulation, that is a .1q and ISL. So .1q is based on IEEE standard,
It is like, it is used in all that manufacturer. It is, we can say, like open standard, and the ISL is for that Cisco proprietary. But Cisco is also using the .1 queue only, because there is the packet size is very low as compared to ISL. So it is easy to move from one VLAN to other VLAN. And one more thing, that this one used, like, this will be used like what I call, so it will be responsible for accepting the multiple VLANs data. Okay, so let me add this trunk port. The trunk port is a part of every VLAN by default, every VLAN, where we can also filter to whom it can carry the data, to like to deny the data. Also we can create, but by default the trunk port is not a part of any VLAN, but the responsible to carry all the available VLANs and send their data to that source to the destination. Let's see how. Look, this is one. Let me configure that fastnet 0x1 as a trunk port. Configure terminal, already we are there. Interface, that is fastnet 0x1. Switch port mode. What is this? Interface fastnet 0x1. Invalid interface type. What is this? Fastnet 0x1. Something issue there. Just a minute. I'm sorry, fastnet 0x1. That is the fastnet 0x1, not 5. That's why it is giving the simple message like that interface type is wrong. Configure terminal. Interface fastnet 0x1. Switch port mode access. Switch port mode trunk. Okay. Encapsulate switch port mode trunk, and we can see there is nothing. So this is done. That switch is, if you see again, like so VLAN, that this time the fastnet 0x1 cannot be available here, because the trunk port will not show under that VLAN. Hope how it come. Sometimes the simulation software is giving some wrong output. We'll try once again. Interface fastnet 0x1. Switch port mode access, port mode trunk. Switch port mode trunk. So we'll then brief. Let me check once again. Just a minute, guys. Okay, we'll configure this first, the router. Okay, I was on the router, I guess. That's why it is not working. Sorry, it's my mistake. We'll do this. Interface gigabit 0x0.1. Just clear. Earlier we are just using 0 fast Ethernet or gigabit Ethernet 0x1 or 0x2 and inter only. But this time we are using this dot. Whenever you're using this dot and that any kind of number, means it is your virtual interface. Okay, so let's see. Switch port. Sorry, there is no switch port. It will be act like your virtual interface. So where we'll assign IP address. IP address. What is our IP address here? IP address is 50.0.0.100. So this IP 50.0.0.100 will be act like a gateway for this 50 VLAN 10 network. Let's see. IP address, that is 50.0.0.100 and the 255.0.0.0, that is subnet. Look, we are able to see here one message is occurring. The configure IP routing on a VLAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as part of IEEE 802.10, that is 802.1q or ISL VLAN. So it is simply clearly telling us only it is possible when that port must be, that in the port encapsulation protocol must be allowed. So let's see.
encapsulation dot one queue. Okay, what is the next? That is for we can say one. Okay, so you're done. Again, we'll create one more interface, that is interface range, interface gigabit ethernet 0 by 0 dot, this time 2. I'm just with this 2 I'm creating another virtual interface for that 50 another VLANs. IP address, what is the IP address? This is 60.10 and our gateway will be 60.100. Let's see. IP address, that is 60.0.0.100 255.0.0.0.0. Here again it is giving the same message. For that also we need encapsulation dot one queue. Here we can do, sorry, here it is asking for 124094. Here we can select 20. So no problem. Let's see whether we'll see that switch side, whether the able to see that the port is, there is no green mark, that is the communication is not established here because seems red. Let's see the interface configure terminal interface gigabit ethernet 0 by 0. We need to no shutdown. So once we did the no shutdown, the communication will be established between this both switch and that in router. Post that, we'll try to communicate from 50 network to the 60 network. Just a minute. It will take some time. Yeah. Let's see where I'm able to ping that ping for 50.0.0.100. I'm trying to ping that gateway. There is no communication. In the same way, we'll try to ping that 60.0. 60.0. Let's see whether it is able to ping or not. Why it is not going to ping? Can anyone text? Why the communication is not going to be done here? Anyone? Okay, I'm able to see their comments. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आप हिंदी में बताइए. ओके, मैं हिंदी में ही इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ. सॉरी, मैं बहुत टाइम से आपका मैसेज नहीं देख पा रहा था. एनीवे, अब हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं. सॉरी. सो अगर जिनको समझ नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा फिर से बताना चाहूंगा. जब भी स्विच पे जब आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं, जब स्विच पे कोई विलेन कॉन्फ़िगर नहीं है, तो अगर सेम आईपी पे है स्विचेस के डिवाइस, सारे डिवाइसेस अगर सेम आईपी पे हैं, जनरली सेम आईपी पे ही रहते हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ओके, सो हम उस टाइम पे इसको यहाँ पे हम जब हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है कि सपोज ये वाले एरिया जो है, ये जो दो मशीन है, ये दो मशीन से कम्युनिकेट ना कर पाए, उस टाइम पे हम एक वर्चुअली डिवाइडर क्रिएट करते हैं स्विच पे, उसको हम लोग वीलेन बोलते हैं. सो वीलेन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये स्विच तो फिजिकली एक है, बट ये बिहेव लाइक जैसे टू डिफरेंट स्विच से कनेक्टेड है ये दोनों मशीन, ऐसा ये बिहेव करेगा. ओके, सो ये तो हो गया एक L2 सिक्योरिटी, ताकि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा. दूसरा बेनिफिट क्या होता है अगर वीलेन क्रिएट करने का दूसरा बेनिफिट है कि सपोज ये होगा, सपोज ये 50 डॉट सिस्टम जो है, अगर ये कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट कर भेजता है इधर, तो ये इसका जो मैसेज जो जहां पहले अगर ये दोनों सेम, सारे मशीन अगर सेम वीलेन पे होते तो सभी मशीन के पास इसका रिक्वेस्ट जाता, जो कि हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को हाई कर लेता. तो उस ड्यूरेशन पे एक और बेनिफिट हो जाता है कि इसका जो पैकेट है ये वीलेन 10 के अंडर में ही जाएगा. तो वीलेन 10 के अंडर में कितने मशीन है? यहाँ पे दो मशीन है, तो इस दो मशीन के बिटवीन में ही वो ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा, अदर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा. इन द सेम वे इसी दो मशीन के बीच में इनके ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन जो होगा इसी दो मशीन के बीच में होगा, तो हार्डवेयर यूटिलाइजेशन हमारा बहुत कम हो जाएगा. तो हमारे हार्डवेयर का जो जैसे मोस्ट ऑफ द अगर ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है किसी भी डिवाइस को, तो वो इट विल बी
हैंडल द एज पर द हार्डवेयर कैपेसिटी ओनली दे कैन हैंडल, अदरवाइज स्विचेस या राउटर हो या कोई भी डिवाइस हो वो हीट होने लगेगा, वो अपना डाउन टाइम कुछ भी इशू हो सकता है, वो अपना डाउन हो सकता है, सिस्टम इंटरफेस डाउन हो सकता है, स्विच डाउन हो सकते हैं, many things. So these are the benefit for to creating this VLAN. अब सपोज दो VLAN क्रिएटेड है और हमें इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करवाना है, तो हमें उस टाइम पे कोई एक ऐसा डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको जिसको अंडरस्टैंडिंग हो L3 हेडर पढ़ने का। L3 मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा मैं बेसिक पे अगर जाऊं तो देयर इज एन 7 लेयर दैट इज कॉल्ड OSI रेफरेंस मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, दैट इज OSI रेफरेंस मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, 7 लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन होता है, सेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वह सेम वे नेटवर्क होता है, फिर डेटा होता है, और उसके बाद ये होता है फिजिकल। तो ये हमारा होता है सबसे सेवन, जो टॉप में है वो 7th में होता है, फिर ये 6 नंबर का होता है, 5 नंबर, 4 नंबर, 3, 2 एंड 1। ओके, सो फिजिकल लेयर में क्या क्या आएगा आपका, जैसे मीडिया हो गया, या फिर हब डिवाइस, डिवाइस में हो गया हब आ जाएगा, डेटा में क्या आएगा, डेटा में आ जाएगा L2 में आएगा, लेयर 2, दिस इज अ लेयर, दिस इज टोटल 7 लेयर्स। सो लेयर 1 में हमारा ये आएगा, टॉप 2 अप जाते हैं हम, बॉटम 2 अप जाते हैं। सो ओके, तो ये फिजिकल लेयर आ जाएगा। ये सेकेंड जो आता है वो डेटा लिंक लेयर में आता है। डेटा लिंक लेयर मीन द सेंस कि जो जिसके अंदर कैपेसिटी हो फिजिकल एड्रेस रीड कर पाने का, जो कि स्विच के पास होता है, जो कि L2 स्विच के पास होता है। ओके, इवन द L3 स्विच ऑल्सो। वैसे ही नेटवर्क में अगर L3 डिवाइस होता है हमारा नेटवर्क, और उसमें उनकी कैपेसिटी होती है कि जो जो यूज होता है डिवाइस वो राउटर होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है L3 हेडर को, L3 हेडर का पढ़ पाना, L3 हेडर के जो डिटेल होते हैं वो सारा चीज वो रीड कर पाता है। ये पैकेट कैसा होता है, हेडर क्या होते हैं, ये सारा चीज जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे या आप जब स्टार्टिंग से शुरू से पढ़ोगे, कोई भी अगर मान लो एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, यहाँ से अगर यहाँ कर ये एक राउटर से ये एक स्विच है और इसके बीच में एक राउटर भी है। ओके, तो अगर ये स्विच ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो इसमें 10.0.0. सपोज ये 1 है, यहाँ पे 10.0.0.2 है। अगर इन दोनों ये अगर ये मशीन इससे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये एक पैकेट जनरेट करेगा। क्या पैकेट जनरेट करेगा, दैट इज सोर्स आईपी। उस पैकेट में एक डिटेल रहेगा सोर्स आईपी का, डेस्टिनेशन आईपी का। वैसे ही सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड द सोर्स मेक, जस्ट मिनट, लेट मी डिलीट दिस to clear this. Okay, just a minute. सो वैसे ही इस पे जो पैकेट इस जो ये मशीन अपना पैकेट जनरेट करेगा, उसमें क्या क्या डिटेल रहेगा देखते हैं। पहले रहेगा ये सपोज एक पैकेट क्रिएट करता है, जिसमें एक पैकेट क्रिएट करता है, उस पैकेट में क्या रहेगा, सोर्स आईपी खुद का 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा जिसको कहाँ जाना है, 10.0.0.2 के पास जाना है, डेस्टिनेशन आईपी। यहाँ पर रहेगा इसका सोर्स में एक, सपोज इस मशीन का मैक एड्रेस होगा एक ए, इस मशीन का एड्रेस है बी। सोर्स लाइक मैक एड्रेस आपके सारे डिवाइस में आजकल जितने भी डिवाइस यूज होते हैं, उन सभी डिवाइस, सभी नेटवर्क डिवाइसेस पे, लाइक आपके मोबाइल में, आपके किसी भी डिवाइस पे एक मैक एड्रेस होता है। जैसे ब्लूटूथ हो गया तो ब्लूटूथ का भी एक मैक एड्रेस होगा, वाईफाई है तो वाईफाई का भी एक मैक एड्रेस होता है, जैसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। सोर्स सोर्स लाइक सोर्स मैक रहेगा, सोर्स मैक में EMI रहेगा। और डेस्टिनेशन, सपोज इसको आइडिया नहीं कि डेस्टिनेशन कौन सा है इसका, तो डेस्टिनेशन पे क्या करेगा ये, FF कर देगा, कि मतलब मेरे को पता नहीं है, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज देगा। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा तो स्विच क्या चेक करेगा, ओके ये अपना ये स्विच के पास क्या कैपेसिटी है, L2 हेडर पढ़ने का। L2 हेडर में क्या आएगा, सोर्स, सोर्स में एक डेस्टिनेशन में ओनली। सोर्स मैच देखेगा, ओके ये वाला सोर्स में आया, स्विच अपना एक मैक टेबल क्रिएट करता है, कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, F0/1। तो ये एक मैक टेबल पे क्या करेगा, अपना F0/1, इस पे का मैक एड्रेस क्या है A, ऐसा करके ये अपना मैक टेबल क्रिएट कर लेगा। इन द सेम वे, अब
अभी देखेगा ये स्विच अपना L2 हेडर अपने ये पैकेट जैसे स्विच के पास जाता है, स्विच इसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद ये देखेगा कि ओके ये एफ है, मीन्स ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए है। ये जो पैकेट है आगे फॉरवर्ड कर देगा स्विच के ये जो मशीन है आगे स्विच के पास फॉरवर्ड करेगा, सॉरी स्विच बाकी जो मशीन है, जितने भी मान लो यहाँ पर 4-5 मशीन है, उन सब पे ये पैकेट जो है ये रिक्वेस्ट वाला पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो जैसे ये रिक्वेस्ट पैकेट फॉरवर्ड करेगा तो क्या लगता है कि सारे डिवाइस आपस में रिप्लाई करेंगे? वो सारे डिवाइस तो रिप्लाई नहीं करेंगे ना, वो वही डिवाइस करेगा जिसका आईपी क्या है, 2 है। किसको किसके पास जाना है, 10.2। तो ये सपोज ये वाले डिवाइस ही रिप्लाई करेगा स्विच को दैट आई एम 10.2 विद द मैक एड्रेस बी। सो राउटिंग यहाँ पर मैक टेबल पे अगेन क्या हो जाएगा, सपोज इस पोर्ट का, लेट मी चेंज दिस, सपोज इस पोर्ट का नंबर है 5F0/2। तो यहाँ पे एक मैक टेबल जो राउट जो स्विच, लेट मी क्लियर टू मेक दिस मैक टेबल। ये हमारा मैक टेबल है समझो स्विच का, दैट इज ऑल्सो नाउन केम टेबल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F0/1, ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला जो था, मैं शुरू से बता रहा हूँ यहाँ पे, F0/1 उसका मैक एड्रेस क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, ए है। ओके, अगेन जब ये रिप्लाई करेगा, बी रिप्लाई करेगा दैट आई एम हैविंग द 10.0.0.2 एंड दिस इज माई मैक एड्रेस। उसके बाद उस रिप्लाई वाले में भी एक पैकेट जनरेट होगा, लाइक उसमें सोर्स आईपी रहेगा, अपना आईपी डालेगा ये सोर्स आईपी में 10.2, डेस्टिनेशन में लेके अपना जैसे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस में अपना मैक एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पे फिर राउटर के पास स्विच के पास जैसे ही इसका रिप्लाई आता है, स्विच क्या देखेगा, फिर L2 हेडर हेडर पैकेट करेगा, ओके मेरे को रिप्लाई मिल गया 10.2 से, जो कि आया है रिक्वेस्ट कहाँ से, F0/2 पैकेट 2 इंटरफेस से। तो ये क्या करेगा, उसका मैक एड्रेस है बी, तो फिर एक स्विच क्या करेगा, अपने मैक एड्रेस टेबल पे इसको जनरेट कर लेगा F0/2, इसका मैक एड्रेस क्या है, बी। तो ऐसे स्विच काम करता है बेस्ड ऑन देयर मैक एड्रेस। सो वैसे स्विच राउटर पे जब आएगा, जब L3 डिवाइस कहलाता है नेटवर्क में, राउटर जो होगा वो सिर्फ आईपी पैकेट को ही पढ़ पाएगा। वो source MAC address and destination MAC address, even with any kind of MAC address, router does not have capacity to read these packets. Okay, so हर एक डिवाइस का एक ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है रीड करने का। तो इसीलिए बेस्ड ऑन ओएसआई लेयर जितने भी स्विच नेटवर्क डिवाइसेस हैं उन सबको एक नंबरिंग दिया गया है, जैसे L1 है, L2 है, L3 है। जैसे पहले हब होता था या रिपीटर होता था, सारे ये फिजिकल डिवाइस फिजिकल पे L1 पे आते थे, दैट इज फिजिकल। अब स्विच आया जो कि L2 कैपेसिटी है, जो मेक एड्रेस पढ़ सकता है। एंड वैसे ही आपका नेटवर्क डिवाइस में अपना आईपी पढ़ सकता है राउटर। सो दीज आर द वे। सो आगे देखते हैं हमारे वापस जो टोपोलॉजी जहां पर हम रुके थे वो देखते हैं, दैट इज फास्ट एथरनेट 0/1। इसको हमें लाना पड़ेगा, एक क्रिएट करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। जस्ट मिनट, आई एम हैविंग वन कॉल, दैट्स व्हाई। लेट्स सी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। वहां पे जाते हैं फास्ट इथरनेट, फास्ट इंटरफेस, फास्ट फास्ट इथरनेट 0/1। इसको क्या कहते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, ये क्रिएट तो हो रहा है बट ड्यू टू दिस इन दिस लाइक नो दिस एप्लीकेशन इट इज माइट बी नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्ट दिस। लेट्स सी, वैसे भी मैंने 3-4 टोपोलॉजी बना रखा है तो ये एप्लीकेशन कंफ्यूज हो रहा होगा।
Let's see. So VLAN brief. ओके अभी देखिए, अभी यहाँ पे वो अपना फास्टनेट 0/1 शो नहीं कर रहा है. इट मीन्स कि वो अभी it is a part of VLAN, that trunk port. Now let's try that connectivity from VLAN 20 to 10. So IP is 60.10 here. Okay, and the same way 50.10 here. Let me ping the gateway. Ping 50.0.0.100. Let's see whether we are able to ping or not. Seems that still there is no communication. Let me try from the router in. Ping 50.0.0.10. There is something issue with that application, so just leave it this is just a concept. Like, let me erase this, just a minute. So basically राउटर ऑन स्टिक क्या होता है, मैं उसको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ. जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये VLAN 10 में है जो कि मैनेजमेंट है. वैसे ही ये अपना अकाउंट का मान लो, अकाउंट टीम है, एंड वी डू नॉट वांट टू मेक द कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर. इन दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कराना चाहते हैं, तो इसलिए हमने VLAN क्रिएट किया. अब सडनली द रिक्वायरमेंट इज कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, बट उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक L3 डिवाइस चाहिएगा जो कि राउटर है. तो यहाँ पे ये जो दोनों पोर्ट है ये VLAN 10 के अंदर में आ जाएगा. ये जो दोनों पोर्ट है 4 और 5 ये VLAN 20 के अंदर में आ जाएगा. और ये जो इंटरफेस है इस पे हमें कोई IP असाइन नहीं करना पड़ेगा. इसके भी आप में क्या होगा, हमारा कमांड क्या रहेगा, इंटरफेस गीगाबिट 0/0.1 and .2 for this one and .1 for this one. सो वैसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वर्चुअल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा. जस्ट मिनट, मार्कर सही से वर्क कर रहा है. सो ऐसे में एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे हम इस वर्चुअल इंटरफेस पे IP असाइन करेंगे. इस वर्चुअल इंटरफेस पे IP असाइन करेंगे. मान लो इसका मैंने क्या बताया, इसका इंटरफेस ID 0.0.1 हमने इसका बताया. इसका गेटवे IP क्या बता दिया, 50.100. इन द सेम वे ये वाला रहेगा, इसका IP एड्रेस हमने क्या बताया, इसका .2 रहेगा, इसका IP एड्रेस हमने बता दिया 100. तो ये क्या और एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा, किसके लिए, ये VLAN 20 के लिए. वैसे ही एक और वर्चुअल इंटरफेस, ये इंटरफेस हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था. तो जब पैकेट यहाँ से जाएगा, तो थ्रू दिस इंटरफेस नहीं जाएगा, थ्रू दिस इंटरफेस ये पैकेट जाएगा. एंड यहाँ से इंटरफेस से इस वर्चुअल इंटरफेस से राउटर तक जाएगा. और राउटर अपना IP पैकेट चेक करेगा कि ओके यहाँ मुझे मेरे राउटिंग टेबल पे क्या होगा, इसके राउटिंग टेबल पे क्या क्या डिटेल होगा. एक तो 0.50 करें 50 इस वाले नेटवर्क का रहेगा. एंड दूसरा टेबल, इस राउटिंग टेबल पे दूसरा एड्रेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, 60 का रहेगा. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस ओके हमारा ये जो इसको जाना कहाँ है, इसको जाना है 50 पे, 50.20 पे. तो ये क्या चेक करेगा राउटर, ओके रिक्वेस्ट आया 50 अपना L3 हेडर जो है वो चेक करेगा. ओके इसको 50.20 पे जाना है, जो कि जिसका इंटरफेस क्या है 0.0.1. तो ये पैकेट यहाँ सिंपली भेज देगा और इसी को यहाँ पे ये रिसीव हो जाएगा पैकेट. तो ऐसा होता है कम्युनिकेशन. बट यहाँ पर ड्रॉबैक क्या हो जाता है हमारे पास, कि अगर ये जो मेन फिजिकल इंटरफेस है, अगर ये फिजिकल इंटरफेस पे कोई इशू आ गया है जिसकी वजह से सारे कम्युनिकेशन हमारे स्टॉप हो सकते हैं. अगर ये इंटरफेस सही से चल गया तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगा. अगर ये फिजिकल इंटरफेस ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे बर्न हो गया या कोई कुछ भी इशू हो गया, तो बाकी के दोनों के कम्युनिकेशन यहाँ से स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा. हाँ, ये जो दोनों हैं
ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, बट ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो ये मेजर ड्रॉबैक है। सो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है SVI, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जिसको हम L2 स्विच पे कम्युनिकेट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें एक L3 स्विच चाहिए था। L3 स्विच चाहिए होता है, जैसे कि L3 स्विच के जो मॉडल होते हैं, जस्ट मिनट, सपोज हमने पहले क्या देखा, एक राउटर थे, जस्ट मिनट, पहले क्या देखा हमने, एक राउटर है, ये एक स्विच कनेक्टेड है, इसका IP है 10, इस पे 5 मशीन कनेक्टेड है। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी पांच पांच यूजर कनेक्टेड है, और ये आपस में कनेक्टिविटी हो गया। और इसका मान लो हम लोग ने 10.0.0.100 दिया इसका गेटवे, इसका 20.0.0.100 दिया, इसका IP का रेंज है, इसका IP के 20.0 पे चल रहा है, ये 10.0 पे चल रहा है। सारे यूजर को 1 2 3 4 5 IP मिले हुए हैं। इन द सेम वे वहाँ पे 1 2 3 4 5 IP मिले हुए हैं। तो यहाँ पे इसका गेटवे क्या हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा 20.100। ओके, ये F0/1, ये F0/2 सपोज। तो यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन इन पे गेटवे IP असाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे राउटर पे हमने ये जो इंटरफेस है इस पे IP असाइन करेंगे, तो ये डेडिकेटेडली एक लाइन हो जाएगा। ये पैकेट यहाँ 20 के लिए, एक पैकेट हो जाएगा 10 के लिए। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक, आज का जो टॉपिक है जिसके लिए हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट किए थे, दैट इज SVI एक्चुअली। So I will interrelate with, after some time I will definitely interrelate with that another this topology. So let me change that, this one. Suppose अभी हमारे पास एक L3 है, उसका मॉडल है मान लो 4500 सीरीज का एक कैटलिस्ट स्विच है। ओके, जो कि L3 डिवाइस है। अभी सेम इन द सेम वे यहाँ पर भी एक सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ पर भी एक सिस्टम कनेक्टेड है, वैसे ही यहाँ 2 सिस्टम कनेक्टेड है, जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। और इसका जो इनका जो विलेन है वो विलेन 10 है, यहाँ पर विलेन 20 है। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आता है अपना SBI का, कि अभी मुझे एक L3 स्विच है। तो अगर L3 स्विच है इन द सेंस कि इसके पास कैपेसिटी है लेयर 2 हेडर रीड करने का, इसके पास कैपेसिटी हो जाएगा लेयर 3 हेडर रीड करने का। तो मुझे एक्स्ट्रा डेडिकेटेड राउटर जैसे पहले हम लोग यूज करते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अभी हम इस स्विच के थ्रू ही यहाँ पे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराएंगे इस विलेन और इस विलेन के अंदर पे। ओके, सो देखते हैं कि क्या क्या इसमें मैकेनिज्म होता है, क्या क्या यूज होता है, वो पहले देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक हमारा L3 है, दैट 4500 सीरीज, उसका उसके अंदर 4 मशीन कनेक्टेड है। जस्ट मिनट। ओके, सो ये 4 मशीन कनेक्टिविटी है। यहाँ एक मशीन है, यहाँ एक मशीन है, यहाँ एक मशीन है, यहाँ एक मशीन है। इसका IP है 10.1 और 10.2, इसका IP है 20.1 एंड 20.2। ये एक विलेन के अंदर में आता है, ये विलेन 10 के अंदर में आता है, ये विलेन 20 के अंदर में आता है। इसके ऊपर कम्युनिकेशन हमें इस्टेब्लिश कराना है, तो हमें इसके लिए कोई डेडिकेटेड R3 डिवाइस की लेयर 3 डिवाइस की जरूरत नहीं है, दैट इज राउटर। क्योंकि इस L3 स्विच के पास कैपेसिटी होता है L2 एंड L3 हेडर रीड करने की, दैट इज मेक एड्रेस L2 एंड द IP एड्रेस दैट इज L3। ओके, सो लेट्स सी देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैंने मान लो इसको हमने IP दे दिया। अब इसमें हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, मैं ऐसे और भी बता रहा हूँ, देन हम लोग चलेंगे टोपोलॉजी पे, जिसपे हम लोग कनेक्ट कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा उसको, सारे कमांड रन करके मैं शो करूंगा आपको। सो जैसे यहाँ पर SBI पे हम लोग कैसे करते थे, एक इंटरफेस पे हम लोग IP देते थे वहाँ पे। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इंटरफेस क्रिएट, पहले तो विलेन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ के लिए इस पार्ट के लिए मैंने क्रिएट किया विलेन 10। ओके, नेम में डाल दिया मैनेजमेंट,
यहाँ पे अगर देखता हूँ इंटर अभी आईपी डालना है मुझे, तो इस जो विलेन मैंने क्रिएट किया है 10, इस पे आईपी असाइन करूंगा, ना कि किसी पर्टिकुलर दिस इंटरफेस पे। ओके, इंटरफेस का रेंज क्या रहेगा? इंटरफेस विलेन 10, उसके बाद इंटर, उसके बाद आईपी एड्रेस रहेगा इसका। आईपी एड्रेस क्या है हमारा? सपोज यहाँ पे 10.0.0.100 है, जिसका सबनेट मास्क 255.255, सॉरी 255.0.0.0 रहेगा। इन द सेम वे यहाँ पर भी रहेगा, मी चेंज द कलर, यहाँ पर भी रहेगा, एक रहेगा इंटरफेस वीलेन। यहाँ पर भी एक वीलेन क्रिएट कर लिए हम लोग, है ना, दैट वीलेन इज 20, और वीलेन 20 का जो नेम रहेगा वो अकाउंट। ओके, सो ये विलेन, विलेन के बाद यहाँ पर आईपी एड्रेस जो डालेंगे वो रहेगा आपका सपोज 20.0.0.100, सबनेट रहेगा 255.0.0.0। सो ऐसा ही एक ये हम लोग यहाँ पर आईपी असाइन कर देंगे। लेट सपोज अब हर एक सिस्टम का मैंने जैसे बताया था कि एक मैक एड्रेस होता है, तो इसका भी एक मैक एड्रेस होगा, दैट इज ए, दैट इज बी, इसका सपोज हम लोग मान लेते हैं सी, इसका मान लेते हैं डी। अब बात यहाँ पर आता है कि ये जो इंटरफेस जो हम लोग पहले क्रिएट करते थे फिजिकल इंटरफेस, उसका भी हर एक इंटरफेस का एक पर्टिकुलर एक विलेन, सॉरी एक फिजिकल एड्रेस होता है। बट यहाँ पर एक हमने क्रिएट किया क्या है, विलेन 10 असाइन किया है, और जहाँ विलेन 10 पे आईपी असाइन किया है, तो डेफिनेटली इसका भी एक मैक एड्रेस होगा। सो ये मैक एड्रेस कैसे मिलेगा स्विच को? कोई मैकेनिज्म है जो कि इस विलेन को और इस विलेन को अपना एक मैक एड्रेस असाइन करे? तो उसके लिए लेयर 3 स्विच पे एक डिवाइस होता है, जैसे सुपरवाइजर इंजन बोलते हैं उसको। तो सुपरवाइजर इंजन क्या करेगा, इनको एक रेंडम कोई भी एक मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देगा इस पर्टिकुलर विलेन को। मान लो सपोज यहाँ को ये ई डिफाइन कर देते हैं, इसको हमने एफ डिफाइन कर देते हैं। याद रखिएगा, सुपरवाइजर इंजन जो होता है उसका काम रहता है, दिस इज काइंड ऑफ मॉड्यूल वन, जिसे जैसे हम बाकी मॉड्यूल जैसे इथरनेट का पोर्ट वगैरह इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, वैसा ही इसका एक सुपरवाइजर इंजन में एक मॉड्यूल होता है जो हेल्प करता है ये सारे विलेन को बाय डिफॉल्ट एक रेंडमली मैक एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। अब यहाँ पे अगर हमने देखें तो क्या लगता है, इस पे कम्युनिकेशन हो जाएगा? और कम्युनिकेशन होगा तो कैसे होगा? लेट मी चेंज द कलर। अगर ये वाला पैकेट सपोज हमारा ये 10.0.0, अब यहाँ पे सारे आईपी असाइन हम लोग सपोज लेट सपोज कि हमने सारे आईपी असाइन कर दिए, सारे कॉन्फ़िगर कर दिए हमने, विलेन पे आईपी असाइन कर दिए, विलेन पे इंटरफेस हमने मूव कर दिए, इन दोनों इंटरफेस को हमने मूव कर दिए। तो इसी भी पे इसी भी पे क्या कम्युनिकेशन होगा? अब क्या होगा, मेन स्टोरी है यहाँ पे। जो जनरली देखिए एसबीआई कोई बड़ी चीज नहीं है जिनको जिनको पता है, बट ये इंटरनली कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है, वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करेगा, एक एआरपी पैकेट जनरेट करेगा। कौन? स्विच। ये अपना मशीन जो है सिस्टम ए एक एआरपी पैकेट जनरेट करेगा, किसके लिए? सपोज ये 20.1 के लिए इसको पिंग करना है। तो ये तो फर्स्ट टाइम है तो एआरपी पैकेट जनरेट करेगा, राइट? तो अभी देखो इसके पास सिर्फ अभी L2 कैपेसिटी है। बाय डिफॉल्ट किसी भी स्विच पे, चाहे किसी भी मॉडल का हो L3 स्विच, उसमें बाय डिफॉल्ट लेयर 2 ही इनेबल होता है। उसको इनेबल करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके आईपी राउटिंग कमांड चलाते हैं। तो आईपी राउटिंग कमांड जैसे ही चलाएंगे हम लोग, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। ये राउटिंग टेबल पे क्या क्या डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे हमने कितने आईपी हैं? अभी दो आईपी है, एक तो 10 का आईपी है, एक तो 20 का आईपी है। दैट विल बी कॉल्ड लाइक, कैसे आएगा इसका, विलेन 10, इसका आईपी क्या है 10.0.0.100। वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और रेंज हो जाएगा विलेन 20, उसका आईपी आ जाएगा 20.0.0.100। एक एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर लेगा जहाँ पर आईपी एड्रेस जितने भी अवेलेबल हैं उसका डिटेल यहाँ पर मेंशन रहेगा। इन द सेम वे अब स्विच है, स्विच तो मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। तो यहाँ स्विच क्या करेगा, एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करेगा। तो वहां पर मैक एड्रेस पे क्या होगा देखते हैं, और उसके बाद एक एआरपी टेबल भी ये स्विच मेंटेन करेगा। देखते हैं कि क्या क्या डिटेल रहता है और किस बिहाफ पे एक दूसरे पे यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होगा, यहाँ पे यहाँ कम्युनिकेशन होगा।
जनरली हम लोग ARP असाइन करने के बाद कम्युनिकेशन होगा, बट इंटरनल वे कैसा होता है उनका वो देखते हैं। सपोज इसने ARP पैकेट जनरेट किया, इस ARP में क्या क्या रहेगा, सोर्स IP रहेगा, दैट इज ओन, दैट इज 10.1। डेस्टिनेशन IP रहेगा, क्या रहेगा वो 20.1। उसके बाद रहेगा क्या है, सोर्स मैक एड्रेस में क्या रहेगा, अपना खुद का A। डेस्टिनेशन मैक में क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक पे अभी ये अपना ARP पैकेट अभी इसके लिए जनरेट नहीं कर रहा है, लेट्स रिमूव दिस। अभी ये ARP पैकेट पे सिर्फ ये जनरेट कर रहा है 10.1, अपना डेस्टिनेशन मेक एड्रेस ढूंढने के लिए, वो अभी एक ARP पैकेट जनरेट कर रहा है। तो ये जो पैकेट रिक्वेस्ट जाएगा ये स्विच के पास जाएगा, और स्विच इसको एक ARP रिप्लाई भेजेगा विद देयर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो डेस्टिनेशन एड्रेस इसको क्या मिलेगा, अभी सिस्टम ए को उसको मिल जाएगा डेस्टिनेशन एड्रेस अपना देगा। ये जो स्विच का जो ये SVI हमने इंटरफेस क्रिएट किए हैं vlan10, और जिसका इंटरफेस जिसका हमारा क्या है मेक एड्रेस दैट इज ई। तो यहाँ पे रिप्लाई जो आएगा उस पे ही आएगा, उस पैकेट पे आएगा कि सोर्स में क्या रहेगा ई अपना इसका, डेस्टिनेशन में क्या रहेगा ए अपना इसका। ओके, तो अभी इसको अब ये सिस्टम को क्या पता चल जाएगा, ओके मेरा जो डेस्टिनेशन मेक एड्रेस है दैट इज ई हो जाएगा इसके लिए डेस्टिनेशन। ओके, तो अभी मान लो अब ये डेस्टिनेशन ARP पैकेट होने के ARP कम्युनिकेशन होने के बाद से, लेट मी डिलीट दिस, स्पेस कम पड़ रहा है। जस्ट मिनट। ओके, अभी क्या होगा, ARP पैकेट पे क्या क्या डिटेल आ जाएगा और मैक टेबल पे क्या क्या डिटेल आ जाएगा। इस ARP जो रिक्वेस्ट इसने भेजा और ये ARP रिप्लाई जो इसने जो भेजा है, जो मैक हमारा SBI ने भेजा है, तो उस पे क्या हो जाएगा, मैक एड्रेस टेबल पे क्या डिटेल मिल जाएगा इसको कि एक इंटरफेस है दैट इज सपोज ये जो मशीन जो सिस्टम कनेक्टेड है उसका पोर्ट नंबर है F0/2। तो ये क्या करेगा, मैक एड्रेस पे F0/2 पे एक सिस्टम कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस है A। ओके, इसको अभी तक ये डिटेल मिल जाएगा। ARP पैकेट में क्या क्या रह जाएगा, ओके ARP पैकेट में रह जाएगा आपका सोर्स लाइक दिस IP, विलेन का IP, सॉरी विलेन 10 का जो है, विलेन हमने 10 क्रिएट किया उसका मैक एड्रेस क्या है ई, vlan20 का मैक एड्रेस क्या है 20 जो कि है F, सॉरी ENF। सो ये एक टेबल बन जाएगा दैट इज कॉल्ड ARP टेबल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल। ओके, ये होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल टेबल। सो अभी बात करते हैं इन दोनों की। तो अभी सपोज यहाँ पे इनको डिटेल मिल चुका है, अभी तक इसके पास इतना ही डिटेल है और इसके पास इतना ही डिटेल है कि एक दो विलेन क्रिएटेड है जिसका SBI क्रिएटेड है जिसका मेक ID ई है ना F है। इसको मेक एड्रेस में भी टेबल है। ओके, F फास्ट डेस्टिनेट 0/2 से जो सिस्टम कनेक्टेड है उसका मेक एड्रेस टेबल A है। ओके, अब सपोज ये मशीन जो है ये कम्युनिकेट करना चाहता है किसको, 20.1 को। ओके, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना आप लोग कि कैसे कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे। अभी ये क्या पैकेट जनरेट करेगा, अभी यहाँ पे सोर्स IP अपना रहेगा, सोर्स IP होगा 10.1, डेस्टिनेशन IP क्या होगा इसको पता है 20.1, सोर्स मेक एड्रेस क्या होगा अपना 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 मेक एड्रेस दैट इज ए। अभी डेस्टिनेशन मेक एड्रेस पे क्या लेगा, ये डेस्टिनेशन मेक एड्रेस इसको पता नहीं है, राइट। डेस्टिनेशन मेक एड्रेस इसका C का A को पता नहीं है अभी। तो ये एक पैकेट जनरेट करेगा दैट इज इसका डेस्टिनेशन एड्रेस। अभी ये जो पैकेट जनरेट करेगा उस टाइम पे अब जो डेस्टिनेशन एड्रेस लेगा वो लेगा अपना SVI का, क्योंकि SVI ने क्या बोला है इसको, तुम्हारा डेस्टिनेशन एड्रेस जब ARP रिप्लेस किया, ARP रिप्लाई हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि अपना मैक एड्रेस दिया है इसको, इस मशीन को दिया है ई का मैक एड्रेस दैट इज योर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन में क्या आ जाएगा ई। अब देखते हैं यहाँ पर जरा ध्यान से समझने वाली बात है कि सपोज यहाँ पे अब ये मशीन यहाँ से एक पैकेट जनरेट हुआ है फिर से, लेट मी डिलीट दिस, मेरे पास स्पेस कम पड़ जा रहे हैं। इरेजर, जस्ट मिनट। ओके,
तो ये स्पेस है, इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी एक पैकेट जनरेट करता है, इसको क्या बोल, ये अभी एक पैकेट जनरेट करेगा, जस्ट मिनट। अभी एक पैकेट जनरेट करेगा, अभी इसको जाना कहाँ है, ए से बी में, ए से सी में जाना है, मतलब 10.1 से 10.2 को ये पिंग करना चाहता है। तो अब जिसके पास जो डिटेल है वो क्या क्या रहेगा, ये पैकेट, एक पैकेट ये फिर से क्रिएट करेगा। उस पैकेट में क्या रहेगा, सोर्स आईपी। इस पैकेट में क्या रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी में क्या रहेगा, 10.1। डेस्टिनेशन आईपी में क्या रहेगा, 20.1। सोर्स मैक एड्रेस में क्या रहेगा, सोर्स मैक में रहेगा अपना ए। डेस्टिनेशन मैक, इसने स्विच ने इसको बता दिया है मशीन को कि तुम्हारा डेस्टिनेशन मेरा रहेगा ई, तो यहाँ पर रहेगा डेस्टिनेशन ई। जैसे ये स्विच के पास ये डिटेल इसने भेजा, स्विच अपना चेक करेगा लेयर टू हेडर। ओके, लेयर टू हेडर में क्या करेगा, ये इसको चेक करेगा, इसका सोर्स ए है, डेस्टिनेशन क्या है ई, तो अपना एक देखेगा मैक एड्रेस टेबल पे है क्या अवेलेबल, दिस इज नॉट अवेलेबल इनटू द मैक टेबल। अभी ये क्या करेगा, मैक टेबल पे इसको फाइंड आउट नहीं होगा, तो अभी ये क्या किसको देखेगा, अभी ये अपना एआरपी टेबल को देखेगा। ओके, ये मशीन जो है जो आ रहा है लाइक 20.1, 20.1 तो मेरे से ही कनेक्टेड है, जिसका ये मेक एड्रेस है, राइट। तो अभी इसके पास ये बोलेगा कि तो पैकेट मेरे लिए है, क्योंकि मेक एड्रेस मेरा ही आ रहा है ई। ओके, ये देखो 10 ई मेरा ही है ये, और 20 क्या है बोलेगा, ये इसके लिए है। तो अभी यहाँ पर ये ई को चेक करेगा, और ई में, ई से चेक करने के बाद बोलेगा कि ओके ये तो मेरा ही है, मेरा ही डेस्टिनेशन है। तो इसके पास जैसे ही वो फाइंड आउट होगा, वो उसके पास L3 हेडर को भी रीड करने का ऑप्शन मिल जाएगा उसको। अब स्विच क्या करेगा, L3 हेडर रीड करेगा। L3 हेडर रीड में क्या पाएगा, उसको डेस्टिनेशन आईपी 20.1 है। ओके, तो अभी ये क्या करेगा स्विच, अब एक एआरपी जनरेट करेगा, किसके लिए, ये जो वीलेन है, ये जो वीलेन एरिया है उनके लिए, इन दोनों मशीन के लिए एक एआरपी जनरेट करेगा। उस एआरपी जनरेट में क्या क्या डिटेल रहेगा, अभी सोर्स मैक एड्रेस में यहाँ पर क्या है, ए है। तो उस टाइम पे क्या करेगा स्विच, ये जो एसबीआई है, वो अपना सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स मैक दे देगा किसको, अभी एआरपी पैकेट पे। सोर्स में क्या रहेगा ई। ओके, डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन में इसको कुछ नहीं पता है। ओके, डेस्टिनेशन का पता नहीं है इसको, सॉरी, डेस्टिनेशन इज, डेस्टिनेशन अननोन, सो सोर्स आईपी रहेगा एंड डेस्टिनेशन आईपी रहेगा। वैसे ही ये दोनों के पास जैसे डिटेल आता है, तो क्या करेगा ये जो स्विच है, आपको क्या लगता है कि दोनों रिप्लाई करेंगे, दोनों रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वही रिप्लाई करेगा जिसके पास 20 जो आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी 20.1, ये यही एक रिप्लाई करेगा स्विच को कि मेरे पास 20.1 आईपी है और मेरा मैक एड्रेस सी है। तो जैसे ही ये रिप्लाई इसको मिलेगा, एआरपी रिप्लाई L3 स्विच को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और एड्रेस क्रिएट हो जाएगा। मान लो इस पोर्ट का नंबर है F0/4, तो F0/4 पे एक मशीन कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस है सी। ओके, एक एआरपी पे यहाँ पे एक और मेक एड्रेस टेबल जनरेट हो जाएगा। अब क्या करेगा ये, फिर से रिप्लाई जैसे आया, ओके ये देखेगा, अब एक नया पैकेट क्रिएट करेगा ये, और उस पैकेट क्रिएट करने के बाद इसको, ये जो इसका पैकेट था उसको अपना इसी का सोर्स मैक एड्रेस के साथ इसको यहाँ पे आपको मूव करा देगा, और यहाँ पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, सो ये हो गया इसका थ्योरी पार्ट कि कैसे एक स्विच एसबीआई में कैसे कम्युनिकेट करता है, किसको इसको जो एसबीआई पोर्ट होते हैं उसको मैक एड्रेस कैसे मिलता है। ओके, और इसका एआरपी पैकेट कैसे जनरेट होता है, एआरपी में उसका सोर्स मैक एड्रेस कौन सा रहेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कौन सा रहेगा, ये सारा चीज इसमें क्या क्या मैक एड्रेस टेबल में क्या क्या रहेगा, एआरपी टेबल में क्या क्या डिटेल रहेंगे। वीलेन अपना जो राउटिंग टेबल में है उस पर आप छोड़ दो, कि राउटिंग टेबल इज जस्ट लाइक जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उनका डिटेल यहाँ पर रहेगा। तो वो तो जब L3 हेडर जब चेक करेंगे तो उस टाइम पे स्विच अपने हिसाब से L3 हेडर के अकॉर्डिंगली पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। तो ये सिर्फ एक एसबीआई ही नहीं पढ़े हम लोग, अभी हम लोग पढ़े कि ये पैकेट कैसे फॉरवर्ड करता है, L3 स्विच पैकेट फॉरवर्डिंग भी पढ़े हैं हम लोग। ओके, सो देखते हैं अब ये प्रैक्टिकल करके, इट वोंट टेक मच मोर टाइम। सो कैसे काम करता है एक्चुअली ये। सो ये हमारा एक L3 स्विच है, और इसका एक गीगाबिट 1/1 ये है, ये 1/2 ये पोर्ट है, एक 1/4 ये पोर्ट है, एक 0/3 ये पोर्ट है। एक हमारा स्विच है L3 स्विच। इसको अभी पावर ऑन करते हैं, लेट मी जूम इन।
जस्ट मिनट, ये ऑन हो रहा है क्योंकि हमने रिसेंटली अभी जस्ट इसको ऑन किए हैं। देखते हैं, इनेबल करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं और इसमें एक वीलेन क्रिएट करते हैं। वीलेन जैसे कि हमने बताया कि मैनेजमेंट एक वीलेन 10 क्रिएट करते हैं जिसका नेम है मैनेजमेंट। और इस वीलेन के अंडर पे हम लोग डालते हैं इंटरफेस, इस वीलेन के अंदर में डालते हैं हम लोग एक इंटरफेस रेंज, और दैट इज गीगाबिट 1/0/1। व्हाट इज दिस, लेट्स सी, गीगाबिट 1/0/1। ओके, 1/0/1 and 2 gigabit 1/0/1, 1/0/1, this 1/1/0/2। ओके, तो ये आ गया इसके अंदर पे। अभी इसको बोलते हैं कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन, इसको वीलेन 10 के अंडर में डालना है हमें। तो ये आ गया मशीन। ओके, सो वीलेन करते हैं, सो वीलेन ब्रीफ करते हैं। तो इससे क्लियरली हो जाएगा कि हमारा जो गीगाबिट ये जो है मैनेजमेंट का हमने जो पोर्ट असाइन किए हैं उसके अंदर में ये 0/1 एंड 0/2 पोर्ट हमने बिल्ड कर लिया है। इन द सेम वे ये जो 0/3 एंड 0/4 है उसको भी हम लोग वीलेन 20 में क्रिएट करते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा ये। यहाँ पे देखते हैं, एक वीलेन 20 क्रिएट करते हैं। ओके, उसका नेम रहेगा स्विच पोर्ट, जस्ट मिनट, यहीं से कर लेते हैं हम लोग। एक वीलेन 20 क्रिएट करते हैं जिसका नेम देते हैं हम लोग अकाउंट, और इसका इंटरफेस है इंटरफेस रेंज, इसको हम लोग क्रिएट कर लिया। अब इसमें इंटरफेस रेंज गीगाबिट 1/0/2 एंड 1/0/3। let me do 1/0/2 and let me see the port id। इसका है 1/0/4, 1/0/3 एंड 1/0/4, 1/0/4। ओके, तो ये आ गया। अभी इसको हम लोग बोलते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 20। सो अभी देखते हैं सो वीलेन ब्रीफ, सो वीलेन ब्रीफ अभी आ गया होगा। ये दोनों पोर्ट देखिए, ये थर्ड एंड फोर्थ इस पे आ गया है। अभी कम्युनिकेशन हम लोग इनके ऊपर देखते हैं कि क्या क्या है। नो, डेस्कटॉप में हम लोग देखते हैं यहाँ पर आईपी असाइन नहीं हुआ है। मैं इस पे जल्द क्विकली आईपी असाइन कर देता हूँ। दैट इज 90.0.0.90, 90.0.0.90 एंड दैट 90.0.0. एक आईपी असाइन कर देते हैं इसको 100.100, क्योंकि गेटवे रहेगा। अभी हमें असाइन करना पड़ेगा उसको। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे एक 99 का मैंने आईपी डाल रखा है। देखते हैं यहाँ पे आईपी है या नहीं। यहाँ पर भी आईपी नहीं है। 99.0.0.1, वैसे ही 99.0.0. इसका भी एक 100 का एक गेटवे असाइन कर देंगे जो कि SBI पे होगा। तभी हमने इन दोनों मशीन पे ही आईपी असाइन किया है, इन दोनों को हम लोग पिंग कराना ही नहीं है। तो लिख देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा। अब हमें आईपी असाइन करना पड़ेगा जो हमारे SBI क्रिएट किए हैं। SBI मतलब वीलेन 10 इंटरफेस वीलेन 10। आईपी एड्रेस क्या रहेगा उसके लिए क्या असाइन किए हैं, 90.0.0.100, राइट। 255.0.0.0 उसका सबनेट मास्क। यहाँ पे 69 की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी मैंने कर दिया है। और वैसे ही हमने फिर से करते हैं इंटरफेस रेंज, इंटरफेस वीलैन 20 पे चलते हैं। इसको आईपी असाइन करते हैं। एक आईपी एड्रेस रहेगा इसका 99.0.0.100। वैसे इसका 255.0.0.0 इसका सबनेट मास्क रहेगा। इसको भी नोस आउट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि हमें देखेंगे अभी अभी मैं कोई चीज़ दिखाना चाहूँगा। सो आईपी राउट करेंगे। अभी यहाँ पर कोई भी राउटिंग टेबल का हमें कोई भी आईपी नहीं दिखा रहा है, राइट। इसको अगर देखना होगा, अगर इसको इनेबल करना होगा, जैसे हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। एक छोटा सा कमांड है आईपी राउटिंग। ये आईपी राउटिंग
जैसे ही हम लोग कमांड रन करते हैं यहाँ पे राउटिंग अभी देखेंगे सो IP राउट, यहाँ पे इसको सारी डिटेल आ जाएंगे। अभी तक 90 का ही हुआ है, इसके बाद थोड़ी देर बाद ये भी आ जाएगा 99.0। लेट्स सी, देखते हैं। IP राउटिंग का कमांड चलाने के बाद ये आ जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कहीं पर सो IP इंटरफेस ब्रीफ देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या IP दिया है, कोई IP असाइन किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने IP असाइन दिया है, बट ये जो वीलेन वीलेन 1 एंड सॉरी वीलेन 10 जो है वो हमने गलत डाल रखा है। जो वीलेन ID है वो हमने गलत डाला है यहाँ पे, देखिए। इसी वजह से ये अभी डाउन है एडमिनिस्ट्रेटिवली, उसको हमें अब करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। इंटर सो वीलेन पहले देख लेते हैं कि क्या क्या वीलेन बना हुआ है। वीलेन ब्रीफ, सो वीलेन ब्रीफ, सो वीलेन ब्रीफ। यहाँ पे वीलेन 10 एंड 20 है। और कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलते हैं। इंटरफेस क्या था वहाँ का इंटरफेस, दैट इज इंटरफेस वीलेन 109 है। और इंटरफेस वीलेन 109, इस पे हम लोग नो IP एड्रेस करते हैं। नो IP एड्रेस, सॉरी ये कमांड गलत है। इंटरफेस वीलेन 109 नो IP एड्रेस, दैट इज क्या IP एड्रेस उसका, इसका 90.100 है। 90.0.0.100 255.0.0.0। तो यहाँ पे IP एड्रेस अभी अगर देखेंगे तो सो IP इंटरफेस ब्रीफ पे वो हट गया होगा। तो अगर कोई भी चीज़ आपको हटाना होगा तो वहाँ से इजीली हट जाता है। ये विलेन 100 है, बट यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा उससे। हमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाते हैं, फिर से हम एक IP असाइन करते हैं। इंटरफेस किस पे, विलेन 10 क्रिएट किए हैं हमने, राइट। इस पे चलते हैं। IP एड्रेस, इस पे क्या IP एड्रेस है हमारा, 90 आई गेस। ओके 90.0.0.100, 90.0.0.100। और वैसे ही 255.0.0.0 इसका सबनेट मास्क रहेगा। नो सेट करते हैं। अभी देखते हैं सो IP इंटरफेस ब्रीफ। अभी हमने इसको अप आ गया, देखिए विलेन 20 पे हमने IP असाइन किया, हमने विलेन 10 पे IP असाइन किया। अभी दोनों अप हैं, तो अभी इनके बीच में अभी अगर सो IP राउट करूँ मैं तो ये राउटिंग टेबल पे भी दिखा देगा इसको सो IP राउट। तो देखिए 99 आ गया और 100 आ गया, सॉरी 99 एंड 90 दोनों का विलेन 10 में है, और विलेन 20 का जो IP है ये एसन क्रिएट हो गया यहाँ पे। अभी हमें कुछ कमांड देखना पड़ेगा। जैसे हमने बोला था कि मेक एड्रेस टेबल भी क्या रहेगा, अभी सो मेक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं है डायनेमिकली। जो गीगाबिट 10/1 को जो कम्युनिकेशन हुआ है वही यहाँ पर मेंशन है। अभी हमने यहाँ पे कोई मेंशन और अदर चीज़ नहीं है। दूसरा चीज़ देखेंगे सो लाइक ना ARP, सो IP ARP एक कमांड होता है। तो यहाँ पे अभी देखो आप विलेन 10 और विलेन 20 का ही दिखा रहा है, क्योंकि जो कि राउटिंग टेबल पे भी अवेलेबल है। मैंने शुरू में ही बताया था यहाँ पे मैंने बताया था कि अभी इनके पास क्या रहेगा, विलेन 10 और विलेन 20 का ही IP रहेगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे है, देखो विलेन 10 का है और विलेन 20 का मेक एड्रेस दिखा रहा है, और यहाँ पे एक IP एड्रेस दिखा रहा है। मेक एड्रेस में मैंने हम क्या लिखा था, E और F लिया था। वैसे ही यहाँ पर 2 और 3 लिया है रेंडमली इसने। और इसका IP एड्रेस 100 है, 90 का, एक 90 के रेंज पे है, एक 99 के रेंज पे है। ओके, सो अब चलते हैं हमारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक बार मैं ट्राई करके फिर से इसको बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा हमारा मेन कॉन्सेप्ट आज SVI है। सॉरी ये टाइम से ज़्यादा ले रहा है। सो हमने क्या बोला था यहाँ पे, जब भी अभी ARP पैकेट इस स्विच के पास जाएगा, ARP पे आपकी इसका मेक एड्रेस रहेगा, सोर्स मेक एड्रेस इसका खुद का रहेगा, दैट इज A, सपोज ये B, ये C एंड ये D। सोर्स में अभी इसका मेक एड्रेस रहेगा A, और डेस्टिनेशन में इसका मेक एड्रेस रहेगा सोर्स मेक डेस्टिनेशन मेक, एंड दैट सोर्स IP इसका 10 रहेगा, और डेस्टिनेशन IP इसका क्या रहेगा। अभी एक ARP पैकेट जनरेट कर रहा है, सॉरी दिस इज जस्ट क्रिएटिंग ऑन IP ARP पैकेट। सो ARP पैकेट पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पैकेट जनरेट होगा तो ARP पैकेट सिंपल इसको, ये अपना ये जो 10.90.90 है ये ARP मस ARP जनरेट करेगा। इसका SBI देखेगा, ओके इसका जो SBI है वो अपना इसका है E, विलियन 10 का है, जो हमने मेक एड्रेस दिया है वो E है बाय डिफॉल्ट। वो अपना ARP इस पे डालेगा, ओके।
ARP जैसे इसको मिलेगा, इसका डेस्टिनेशन मिल जाएगा, ई है इसका, तो सोर्स अभी इसको अभी अब यहाँ से पैकेट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा, बिना ARP के पैकेट कम्युनिकेशन नहीं करेगा। सोर्स IP में अपना डालेगा ये ए, डेस्टिनेशन में डालेगा अपना ई, ओके। सोर्स IP में अपना डालेगा 10.90 और डेस्टिनेशन में अपना डालेगा 99.1। अभी एक पैकेट क्रिएट किया, इसने पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया किसके थ्रू, इस इंटरफेस के थ्रू। इसको आया स्विच को, स्विच क्या चेक करेगा अपना, हमने क्या बोला था, एक ARP टेबल क्रिएट होता है और एक मेक टेबल होता है। ARP में ऑलरेडी VLAN 90 और VLAN 10 एंड 20 का डिटेल पड़ा हुआ है इस पे, तो अपना क्या चेक करेगा, ये तो VLAN 10 है और VLAN 20, और इसमें मेक एड्रेस में क्या करेगा, ये एक अभी सिंपल है, मान लो सपोज F0/1 है इसका पोर्ट आईडी, तो F0/1, और इसका क्या रहेगा, एक मेक एड्रेस रहेगा दैट इज A। सो इसके थ्रू ये चेक यहाँ पर कम्युनिकेशन आएगा, जैसे स्विच के पास पैकेट आएगा ये अपना अपना चेक करेगा, ओके सोर्स में क्या है, ए, ओके दैट इज अवेलेबल इन दैट मेक टेबल। और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन इसका आएगा, डेस्टिनेशन में आएगा ई। तो सो स्विच देखेगा, ये SBI देखेगा, स्विच तो मेरा ही है ई, तो अब इसके पास L3 हेडर ओपन करेगा, L3 हेडर में क्या मिलेगा, इसको IP मिलेगा। L3 हेडर में अपना एक नया पैकेट जनरेट करेगा स्विच, उसमें क्या करेगा, सोर्स में अपना अपना ई डालेगा, डेस्टिनेशन में ब्रॉडकास्ट एक ARP पैकेट ये भी जनरेट करेगा, ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा, ARP में रिप्लाई आएगा अपना ई के साथ। तो इसको इसको स्विच में एक और टेबल, एक और मैंने बताया था कि एक और एंट्री क्रिएट हो जाएगा, दैट इज सपोज इस पोर्ट का नंबर है F0/5, तो यहाँ पर आ जाएगा F0/5, इसका IP एड्रेस रहेगा 90.1। और वैसे ही यहाँ पर इसको मिलने के बाद ये पैकेट से फिर अपना अपना मैक एड्रेस हटा देगा और यहाँ से इसको रिप्लाई का कंफर्मेशन आ जाएगा। सो स्टेब्लिश कम्युनिकेशन होता कब कैसा है, और जैसे उसका मैक एड्रेस पे क्या क्या डिटेल रहते हैं, ARP टेबल पे क्या क्या डिटेल रहते हैं, बेस्ड ऑन ये मैक एड्रेस और ARP टेबल देख के ही स्विच SBI का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको उसके थ्रू ही पैकेट फॉरवर्ड करता है, ओके। सो ये रहा आज हमारा SBI। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है और उस पर अभी तक क्या क्या अवेलेबल है ARP पे, वो भी दिख जाएगा। पिंग दैट इज 99.0.0.1, लेट्स सी। अभी यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है, ओके। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 99 से 90 को, तो यहाँ से भी आ जाएगा। अभी इसको पिंग करने से पहले एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ARP टेबल पे अभी क्या क्या डिटेल मिलेगा आपको। सो IP ARP, तो ARP टेबल पे अभी देखिएगा क्या क्या मिलता है आपको। एक तो 90 का मिलेगा, दैट इज देयर ओन। एक तो एक और 90 100 का मिलेगा, जिसका इस 90 का जो कि गेटवे है, जस्ट मिनट। सो वैसे ये 99.1 और ये 99.100 का ही डिटेल अभी इसको मिला हुआ है, राइट। सो ये सारे ARP टेबल मैक एड्रेस और VLAN क्या है, VLAN का डिटेल, ये सारी चीज अवेलेबल मिल जाएंगे। सो दिस इज दैट our SBI, how they are going to communicate, and the SBI is only that we are using in the real time. So that's all. Hope this live session is given some value to all of you. And hello. So that's all for today. Thanks for being with us. Hello. हेलो, Yes, sir. डन। Yeah, done, sir. ओके गाइज, किसी को अगर ज्वाइन करना है, सो लिंक जो है हमने दे दिया है चैट के अंदर। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके जो है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं CCNA को, और फ्रेश बैच हमारा 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग एंड बाकी और क्या अदर बेनिफिट्स रहेंगे, वो सभी चीजें जो हैं आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे, वहीं पे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, राइट। आपको होप करते हैं कि आप जो है ऑनलाइन हम आपको बैच के अंदर देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू वेरी मच Thanks a everyone lot, sir. for giving our time, and thank you Mahesh, Thanks a lot, sir. thank you guys.